Assalamualaikum. This is me Zaib Un Nisa, and today I'm discussing with you the demo session of my new 45 days English session. So the first one part of my demo is about spoken practice. For example, हम अपने सेशन में स्पोकन 30 मिनट्स की स्पोकन प्रैक्टिस किया करेंगे. आई विल मेक द पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, दो दो की शक्ल में वो आपस में डिस्कशन करेंगे. उनका माइक ओपन होगा और वो एक बार मेरे से डिस्कशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, देन वो आपस में करेंगे. फॉर एग्जांपल, here are two people A and B and they are unknown, like वो अजनबी हैं, वो आपस में मिलते हैं. सो वन से हेलो, सेकंड से हाय. फॉर एग्जांपल, इफ A says hello, B will say hi, and then again A will say what's your name? B, my name is no. For example, if A says to me what's your name, I'll say Zaib Un Nisa. What's your name? Zaib Un Nisa. Where are you from? Sialkot. Are you a student? No, I'm not. I'm a teacher. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो स्टूडेंट नहीं है वो बी वाला, तो वो कहेगा नो आई एम नॉट, आई एम अ टीचर. एंड इफ़ ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ स्टूडेंट, ही और शी विल से यस आई एम. इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन. इफ़ ही इज़ अ स्टूडेंट, सॉरी, if he is a student, he will tell the name of class. So like this there will be discussion in the class. आज तो डेमो है, इसलिए हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे. Then after discussion, spoken class, there is grammar और you may say parts of speech. Parts of speech को हम डिस्कस करेंगे. And you know that what parts of speech starts from noun. Noun means name, and here I have written some identification of nouns. The words end on ship, meant, zan, shun, ens, et, aunt, ant, e, l, o, et, ism. First, these are called nouns. जितने भी वर्ड्स इन पे सुफिक्सेस पे एंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? नाउन्स. सो इस तरह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे. एंड देन फॉर एग्जांपल, आई विल से यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एनी 3 नेम्स इन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. जो भी आपके सराउंडिंग्स में नेम है वो आप एनी 3 जो है ना वो लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में.